Welcome everyone to Ameya channel. Today we are going to study pair of linear equation in two variables. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. फाइन. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमको टू द पॉइंट रिवीजन करना है ताकि हम 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सके. ओके, सो यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि आप पूरा बुक मत पढ़िए. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पढ़िए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. फाइन. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में होता क्या है, व्हाट इज देयर. यहाँ पे दो लाइंस होते हैं. देयर आर टू लाइंस इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ही होता है कि दो लाइंस. अब वो दो लाइंस के बीच का जो रिलेशन है हमको वो ही पढ़ना है. मींस कि दो लाइन किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं. मींस इन इंग्लिश, इफ we have to study in this chapter how two lines are behaving with each other. Fine. So हमको उसके concept के बारे में पढ़ना है. We have to study about the concepts about this line, and we have to exactly study how these lines are getting solutions. Fine. So without wasting time, first I will teach you what is called as a solution. What is called as a solution? So first you see, if you are writing, 1 minute. Fine. If you are writing an equation x plus 5 is equal to 3, then 5 will shift this side. So this one will become 3 minus 5. So this one will become x equal to minus 3. Now what this x equal to minus 3 is? This is called as solution. Okay, this solution is solution of which equation? This equation itself. Then how you will prove it? Just instead of x in LHS side, you put x equal to minus 2. Then it will become minus 2 plus 5. It will become equal to 3. And definitely right hand side is equal to 3. So this is called as solution. Now, regarding or about a line, how we are going to get a solution? A line is made up of infinite number of points. Okay, there is no end point for a line. एक line जो है वो infinite number of points से बनी है. तो अब उस line में जितने भी points होंगे, how many points are present on the line, that points will satisfy the equation of the line. मैं फिर से बोल रही हूँ, इसको अच्छे से दिमाग में डालिए. Whatever points are present on a line, that points will satisfy the equation of the line. That points will satisfy the equation of the line. Means जो भी points line में present हैं वो line के equation को satisfy करेंगे. Fine. तो ये था कॉन्सेप्ट लाइन के बारे में. ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है. इट इज नॉट गोइंग टू कम. आपको सिर्फ टू द पॉइंट रिवाइज करना है अभी. डोंट वेस्ट योर टाइम इन अनवांटेड थिंग. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, मींस व्हेन वी आर टेकिंग टू लाइंस, when we are taking two lines, then that lines can either be intersecting or can be parallel or can be coincident. Coincident means जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर में हो और दोनों लाइंस के कांटेक्ट पॉइंट सेम हो. मींस इफ टू लाइंस आर प्रेजेंट ऑन ईच अदर, ओवरलैप्ड ऑन ईच अदर, अगर आप उसको ऐसा कह सकते हो, और उनके सभी पॉइंट्स कॉमन हो तो उसको कोइंसिडेंट पॉइंट्स कहते हैं. फाइन. अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नाउ देयर आर टू वेज टू फाइंड linear equation in two variables, pair of, that is graphical method और algebraic method. Graphical method में अभी डिस्कस कर रही हूँ. We are going to discuss graphical method. Algebraic method I am not discussing right now. Fine. So now in next video I will be discussing algebraic method. In that I will discuss very important points. कोई nonsense नहीं, सिर्फ important points. Fine. So without wasting time, what is a graph? You know how to draw a graph? If x plus y is equal to 5 is there, then how to draw a graph of a line? So this is exactly equation of a line. This is equation of a line. Equation of a line means what? कि यहाँ दो वेरिएबल्स है, x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, और दोनों ही लीनियर फॉर्म में है. अभी दूसरे वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्वाड्रेटिक क्या होता है. यहाँ पे दोनों के डिग्री जो है वो 1 है. तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. तो अगर हम सिर्फ ये लिखे तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. ओके. और अगर हम ये दोनों लाइन को एक साथ लिखे
तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ, अगर सिर्फ एक है तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ये दोनों हैं तो ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और लाइंस कैसे बिहेव करेंगे, या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे, या तो पैरेलल होंगे, या तो कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले सीखते हैं, जिनको नहीं पता है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंपल तरीका बताती हूँ। टू ड्रॉ a graph you sorry to draw a line you need exactly 2 points। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट काफी होता है। टू ड्रॉ अ लाइन यू नीड 2 पॉइंट्स। टाइम सेव कीजिए, करेक्ट पाथ पर चलिए, और यहाँ पे x लिखिए, y लिखिए। अब x का कोई एक वैल्यू पुट कीजिए, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो x का कोई एक वैल्यू पुट कीजिए। when x is equal to 0, then definitely if x is equal to 0, y will ultimately become equal to 5. So y will be equal to 5. When x will be equal to 2, then 2 plus y is equal to 5। इक्वेशन में x की जगह पे 2 पुट कीजिए, then what you are getting, y is equal to 3। that means when x is equal to 2, y is equal to 3। that means now in coordinate you need 2 points। x is equal to 0, y is equal to 5। so यहाँ पे एक 5 पॉइंट ले लेते हैं, 0 5 ये आ गया आपका। दूसरा है x is equal to 2, y is equal to 3। x is equal to 2, y is equal to 3। so definitely with the help of these two we can draw a line, and this line is x plus y is equal to 5। so this is how to draw a line। ओके नाउ अगर पेयर ऑफ लाइंस होगा तो एक और इक्वेशन होगा, उसको इसमें ड्रॉ कीजिए। और अगर मान लीजिए मैंने ले लिया एक और लाइन y इज इक्वल टू x, नाउ x का वैल्यू अगर इसमें आप 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी 1 होगा। if you will put for this equation, if you will put x is equal to 1, you will get y is equal to 1। if you will put x is equal to 0, y is equal to 0। तो ये ऐसे होगा, तो इसका मतलब जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से ड्रॉ होगा। सो अब एक बात बताइए, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं, ये एक दोनों को, ये जो हमने बनाया है, ग्राफ ड्रॉ किया है, इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि ये भी एक बिहेवियर है लाइन का। दिस इज एग्जैक्टली रिप्रेजेंटिंग one of the type of lines, when pair of lines are there, they may be intersecting each other। so here it is representing the lines are intersecting each other। okay अब इसके बाद ज्यादा दिमाग मत लगाइए, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ग्राफ बनाना सीख लिया, 2 पॉइंट लेना, एक बार फिर से रिवाइज करें। यू हैव टू टेक 2 पॉइंट्स, with the help of 2 points you draw a line, and if 2 lines are given then separately take both the equations, put whatever value for x is there, you will be getting a value for y, and उसके साथ आप उस लाइन को ड्रॉ कर दोगे। अब लाइंस कितने तरह से बिहेव करते हैं, या either line will be parallel or intersecting or coincident। fine, next graphical method। in graphical method lines can either be parallel or lines can be parallel। then what is the definition of parallel? Parallel means when two lines will always be equidistant to each other। इक्विडिस्टेंस मीन्स अगर यहाँ पे डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर होगा और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर होगा। देन टू लाइंस आर सपोज टू बी पैरेलल। ओके इंटरसेक्टिंग मीन्स देन देयर इज नो कॉमन कॉन्टेक्ट पॉइंट। नो कॉमन कॉन्टेक्ट पॉइंट, यहाँ पे कोई भी कॉमन कॉन्टेक्ट पॉइंट नहीं है। okay there is no common contact point, but if two lines are intersecting each other then there is one common contact point, one common contact point। okay but when two lines will be exactly overlapping on each other or lying on each other, then all points are common, means
all points will be the solution for both the lines. All points are common means जितने भी points दोनों लाइन में होंगे वो दोनों के लिए सेम ही होंगे, तो इसी केस को कोइंसिडेंट कहते हैं। ये पैरेलल हो गया, ये हो गया इंटरसेक्टिंग हो गया, और ये कोइंसिडेंट हो गया। फाइन, अब नेक्स्ट में चलते। तो ग्राफ में आपको या तो दो लाइंस पैरेलल मिलेंगे, आपको या तो ग्राफ में दो लाइंस पैरेलल मिलेंगे, या तो ग्राफ में दो लाइंस, मैंने इसको रफली ड्रॉ कर दिया और आपको दिखाने की कोशिश की। ओके, दो लाइंस या तो एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगे, या तो आपको ग्राफ में दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए मिलेंगे, या तो दो लाइंस आप एक दूसरे के कोइंसिडेंट मिलेंगे। फाइन, तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझेंगे। सिंपल वे में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट समझाती हूँ, बहुत कम टाइम में आराम से समझ जाओगे आप। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका सॉल्यूशन हो। कंसिस्टेंट मींस हैविंग सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, मतलब जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। अब बेस्ड ऑन दिस फैक्ट, अब हम जो पढ़ चुके हैं उसमें अभी उसका यूज करेंगे हम, ठीक है। तो अब हम कंसिस्टेंट, पहले हम दो लाइन लेते हैं। a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. This is line 1. And a2x plus b2y plus c2 equal to 0. This is line 2. Now, when line 1, then there will be three cases. I told you case 1, case 2, case 3. केस 1, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, देन डेफिनेटली वन कॉमन कांटेक्ट पॉइंट है। Okay, that means line 1 and line 2 are intersecting each other, they have one common contact point. Okay, in that case coefficient a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Okay, intersecting case के लिए a1 by a2 is not equal to b1 by b2. That means coefficient of variable x and y, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, and this type of solution is called as unique solution. Unique solution. What this type of solution is called as? Unique solution. Unique solution, and it is consistent. Consistent, why? Because it is having one solution. Because it is having one solution. How many solutions it is having? Because it is having one solution. Having one solution. Because one common contact point, so one solution. So क्या हमने सीखा केस 1 में? That एक common point है, मतलब इसका एक solution होगा, वो common point ही उसका solution करेगा। दूसरा, इसका हम कैसे किस फॉर्म में लिखेंगे? a1 by a2 is not equal to b1 by b2. लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब केस सेकंड हो गया, जब एक लाइन L1 L2 के ऊपर ओवरलैप करेगा, तो ये हो गया केस, ये इंटरसेक्टिंग का केस है। दिस केस इज फॉर इंटरसेक्टिंग, दिस इज केस फॉर कोइंसिडेंट। सो इस केस के लिए a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. ओके, दैट मीन्स a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अगर केस हो, उसी केस में होगा जब दोनों लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगे। ऐसे केस के लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, आपको मैंने पहले ही बोला था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इट इज अ केस फॉर इनफाइनाइट many solution. It is a case for infinite many solution. Why? Because both the lines are coincident on each other. Since the lines are coincident on each other, all the points present on the line are exactly common. So many solutions will be coming. All these points are exactly going to satisfy the equation of line. So infinite many solution, or when solution word is there, that means it is consistent. What it is? Consistent. Now, when two lines will be parallel, then what will be the case of parallel case? When two lines will be parallel, then a1 by a2 is equal to b1 by b2, but not equal to c1 by c2. Then that means what? No solution.
No solution. Why? Because there is no common contact point. Since there is no common contact point, there is no solution. And if it is having no solution, that means it is inconsistent. So what we have learned, final, how to draw a graph, first thing. Second one, how to draw a graph. After understanding how to draw a graph, what we have studied, that how to exactly do that three intersecting lines, how to understand the nature of the lines, intersecting, parallel. And last, what we have studied, how to know which one is parallel.